हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का माय इंग्लिश बुक 8 3.3 ट्रूथ इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम्स अलाउड एंड रिसाइट इट विद प्रॉपर रिदम। तो ये आपको खुद को करना होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड फ्रॉम द पोएम टू लाइन्स ईच दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। पहले एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लाइन्स में है वो लाइन हमें राइट डाउन करनी है। फर्स्ट है स्टिक एंड स्टोन माई ब्रेक माई बोन्स। सेकेंड, बैट्स एंड ब्रिक्स मे एच थ्रू बोन्स। रेसिटेशन है अभी, स्टिक्स एंड स्टोन्स माई ब्रेक माई बोन्स, स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन। अभी 3 है, 3 में ए, पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। इनके सिनोनिम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है इंजुरी, ब्रॉइस, डेलिकेट टेंडर, एचे स्केयर, एम्बेरेस, मॉर्टिफाई, क्रूल, हील्ड। बी है पिक आउट फ्रॉम द पोयम द एंटोनिम्स ऑफ। इनके एंटोनिम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फॉरगेट, रिमेंबर, फ्लैट और स्ट्रेट, कर्व, मेक, ब्रेक, राइज, fall, outside, inside. Question 4. Answer in your own words with the help of poem. Write them in your notebook. A है, what objects can cause injury to your body? Answer, sticks and stones can cause injury to body. B है, how do hash and bitter words hurt the poet? Answer, hash and bitter words hurt the poet's feelings. C question, what can heal faster body or the mind and hurt emotions? Explain your choice. Answer, body can heal faster but we require a lot of recovered if our emotions or feelings are hurt. Question, why are hash words called ghosts? Answer, because they disturb our mind for a long time. E question, what does the poet want you to keep in mind when you speak? Answer, poet want us to keep in mind kind words while speaking. Question 5, find the rhyme scheme of the stanza. Number 2 and 3. 1 is done for you. यहाँ पे देखो स्टैंजा 1 में राइम स्कीम कौन सी है? ए बी सी बी ये राइम स्कीम है। स्टैंजा 2 में राइम स्कीम कौन सी है? ए बी सी बी है। स्टैंजा 3 में ए बी सी बी यही राइम स्कीम है। क्वेश्चन 6, just as words can hurt and leave a scar on the mind and hurt words can also heal a person in distress. Write in your notebook an experience of your own which provides that kind words relieve distress. तो यहाँ पे आंसर दे दिया है मैंने। Question 7, complete the following. The title of the poem, Truth. The poet of the poem, Barry Wade. Number of stanzas, 3. Theme of the poem, we should not say anything bad to anyone. We should use word carefully. Rhyme scheme A B C B है. Figure of speech, alliteration and repetition. The line I liked, pain from words has left its scare on mind and hurt that tender. Question 8 है, summarize the poem in short in your own words. पोयम को हमारी वर्ड में समराइज करना है, ये पॉइंट कंसिडर करना है उसके लिए। तो आंसर है ये देखो, समरी ऑफ द पोएम। सो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, राइट कर लो।
थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.